Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today we'll continue with our chapter number 4th, which is the periodic table. So in our last video, we discussed about what are transition metals, and today I'm going to give you like a bit of overview of that, what transition metals are eventually. And we'll go on and discuss about alkali metals. We'll discuss about halogen gases, which we have already not done. I think so. We've done noble gases. So today is a very interesting day. So if we get a recap of what we have learned so far, it is that transition metals have all the properties of metal. They have high density, high melting point, they're good catalyst, they form colored compounds, and they have variable valencies. These are the most important things that you should know about transition metals. And let's just continue with reactivity and the periodic table today. If we discuss about reactivity, what basis, like हमें पता चलता है, we discuss usually that how reactive things are. We usually say that sodium, not sodium, let's say calcium is reactive, or if we say chlorine is reactive. What makes atom reactive and non-reactive, less reactive or more reactive, we're going to learn today. So what is reactivity? Reactivity is actually, it means how fast and slow an atom take electron or give electron. Alright, so that's what reactivity is eventually. So reactivity all depends on the valence shell, or you can say the last shell of what, of atom. It depends on that. Okay, for example, if it is easier to lose electron, which means, for example, we have an atom. ठीक है, एक atom ले लेते हैं, उसके पास बहुत सारे shells हैं. ठीक है, बहुत सारे shells हैं, and it has electron, and the connectivity between the electron and the nucleus is like so far away. So it is very easy to lose electron, which means it has eventually less attraction, or you can say it has less energy, which is required to use, right? To use or to lose it. Okay, so अगर हमारे पास के पास ज़्यादा एनर्जी होती, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है, it has like, it is like very much connected, like if this is electron, it is quite far away from the nucleus, so it has less energy, less attraction, so it's easier to lose, right? And if we have a small atom, ठीक है, which is like ये है और ये है, and it has electrons, so it has more connectivity, बोल सकते हैं, it has more energy and is more connected to a nucleus. ठीक है, so gaining of electron is, ठीक है, is easy. ठीक है, if it is a small atom, gaining of electron gets very easy. ठीक है, तो अगर कोई ऐसा शेल है और ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, इट्स ईजी टू लूज. एंड अगर कोई ऐसा शेल है, आई मीन स्मॉल एटम है या हमारे पास एलिमेंट है जो स्मॉल है, लाइक उसका शेल एंड उसका जो इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे पास न्यूक्लियस है, दे आर लाइक वेरी मच कनेक्टेड, और यू कैन से दे इंटरलिंक्ड वेरी नाइसली. If they are interlinked very nicely, it's very easy to use. I mean, it's very easy to gain electron eventually. So let's just talk about the non-metals and metals. We know that non-metals हमारे पास वैसे ही gain करते हैं electron. ठीक है, अब अगर हम example ले लें, let's just talk about oxygen. We know that to stable itself, it will gain 2 electrons, and it will have a charge of -2. Right. So how do we know the reactivity of non-metals? So the reactivity of non-metals is more like कि अगर हमारे पास बिगर नॉन मेटल है, ठीक है, बिगर नॉन मेटल जैसे हमारे पास
ऐसा एक एटम है जो एक ऐसा है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, the distance between this and this, the electron and the shell, I mean the nucleus and the electron is quite at a distance right now. It's a big non-metal we're talking about, ठीक है. तो गेन करना मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होगा. गेन करना आसान मतलब क्यों होगा, आसान क्यों नहीं होगा, दैट्स बिकॉज कि हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन द शेल and the distance between the nucleus is very big. Okay, so that's why it has less reactivity, ठीक है. So अगर हमारे पास कोई bigger non-metal है, so it is less reactive, while if we talk about a small um, atom of non-metal, it will be more reactive, ठीक है. For example हम बात कर लेते हैं हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं. हाइड्रोजन जो है हमारे पास न्यूट्रल होता है, मतलब वो हमारे पास मेटल्स में भी आता है, नॉन मेटल्स में आता है, बट लेट्स जस्ट टेक इट एज अ नॉन मेटल राइट नाउ. इट हैज़ वन इलेक्ट्रॉन and it is very much near to the nucleus, so that's why it's very easy to gain, ठीक है, and make bond, so that's why it's more reactive, ठीक है, it's more reactive, ठीक है, so it's more reactive. So that's about non-metals. Let's just now talk about metals. मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स का अलग होता है. मेटल्स हमारे पास यूजुअली क्या करते हैं, लूज़ करते हैं हमारे पास क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो, ठीक है. तो अगर हमारे पास कोई बिगर नॉन मेटल हुआ तो इट विल इवेंचुअली हैव मोर रिएक्टिविटी, ठीक है, इट विल हैव मोर रिएक्टिविटी. क्यों, बिकॉज अगर बड़ा इलेक्ट्रॉन है सो इट्स वेरी इजी टू लूज़, तो ईजिली वो यूज़ कर लेगा, तो ज़्यादा रिएक्टिव. अगर स्मॉल हमारे पास है, ठीक है, तो इट्स लेस रिएक्टिव बिकॉज वो न्यूक्लियस से उसका कनेक्शन काफ़ी अच्छा होगा, तो इस वजह से वो इतना बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा और लूज़ नहीं कर पाएगा. सो दैट्स वाई that's how reactivity works in the periodic table and within the elements. हमारे पास eventually reactivity क्या होती है, it's like how fast and slow an atom take electron or give electron. हमारे पास नॉन मेटल्स के अंदर और मेटल्स के अंदर रिएक्टिविटी कौन सी होती है हमने पढ़ ली. अगर हमारे पास कोई नॉन मेटल है वो गेन करता है इवेंचुअली, अगर बिगर नॉन मेटल है तो दैट्स लेस रिएक्टिव, while स्मॉल इज रिएक्टिव. इफ़ वी टॉक अबाउट मेटल्स, अगर हमारे पास वैसे ही लोग लूज़ करते हैं. So if a bigger metal, it has more reactivity and a small has less reactivity. So that was all about today's video. In my next video, we'll discuss about displacement principle, which is then very important for our chapter. Thank you.